Hi everyone. So this is a very detailed video on Cognizant GenC hiring process. So if Cognizant is coming in your college, after watching this video, I am 100% sure you don't need to watch any other video to know the hiring process and details about Cognizant GenC. Because only in this video, what we will be solving. So generally, Cognizant asks the aptitude assessment as the first round, so we will be solving the actual aptitude assessment of Cognizant to get an idea what kind of questions do Cognizant ask. Then we will be solving the aptitude section because then Cognizant will ask you the aptitude section. In the aptitude section, they ask 30 questions on aptitude and game based assessment. So both these things we will be solving. We will be solving some aptitude questions and we will be solving the game based questions as well, and then we will be solving the technical assessment, which is very difficult round. Also, they ask multiple questions, one from web based, two from SQL queries, and two from coding. So when you will watch this video till the end, you will be getting an idea of all assessments because we will be solving the actual communication assessment, we will be solving the actual aptitude assessment, we will be solving the actual technical round. So make sure to like this video and let's start. Let's quickly talk about the eligibility criteria. 27 batch B Tech MEM Tech is eligible to participate. All the mandatory documents which you need to upload is mentioned here, and your college ID card should be there with you. Okay. Talking about the process, in the process, this is the flow. So in the flow, they have clearly mentioned the assessment process. So in the assessment process, first there will be registration, then screening, communication and aptitude round will be there as the round one, then there is technical assessment, then technical interviews, and then there will be offer letter. In this video we will be talking about communication assessment, aptitude assessment, technical assessment, everything we will be talking about these in this video. And see, for technical assessment, these are the clusters which they have provided. Okay, and this is the default cluster, which is Java cluster, which will be looking like this. And this is the document officially from Cognizant. So let's start with everything. Cognizant GenC ACE or NPM communication assessment. Why we are talking about communication assessment? Understanding that is very, very important because see, whatever profile is coming in your college, be it Cognizant GenC, ACE, or Cognizant NPM, they will be conducting the communication assessment and it will be your first round. So in your first round, the first part of the assessment will be communication assessment. Okay, so this is your basic first round in which you need to compete, in which you need to you need to use your speaking abilities, your grammar abilities to solve the questions of communication assessment with exact pattern. Everything we will be solving the communication assessment in this video. Also, why this video is very, very important, because not only I will be guiding in this video, I will be showing you the practical actual communication assessment. So about each section you will be getting an idea that how the exact assessment will be looking like and how will be going to attempt the assessment. Now you will be asking me, Bhaiya, tell me one thing, if you will be showing us like the actual atmosphere, actual communication assessment, how this is possible? It is possible because what we have done is we built our own website in which you can practice the communication assessment. So we have our own website on which you can practice the communication assessment. That's what we did. So from that websites only, I will be showing you the every section, every part, so you will get an actual idea what kind of questions, what kind of sections you will be getting. Okay, so before starting to it, how you will be getting that website and everything. So in Cognizant GenC mock test, we have included everything. Not only for communication assessment, you will be getting everything needed to crack the communication assessment here, but we have included the aptitude assessment and technical assessment as well, which is very, very important to crack SQL, Cognizant. So basically for aptitude assessment, what we have done is we have provided the previous year questions with solution.
So this is the one thing which you can do. Apart from this, you will be getting the mock test. Okay, so basically in the mock test, you will be getting the timer. So with timer, you can attempt these mock tests. So you will be getting multiple quantitative aptitude questions which you can practice with timer for actual assessment for your Cognizant GenC assessment. And for technical assessment also, we have provided the previous year papers and solutions. So previous year paper for everything, like for coding questions, SQL, okay, and web based, everything you will be getting. Now for practicing also, we have provided some interactive things also. You will be getting some mock test, and you will be getting the separate sections. Like for SQL, you will be getting the separate section, okay, and for technical MCQ there is a separate section. Also for the previous year questions, you can see here the separate sheets are provided for coding, SQL, and everything. So technical section also you can prepare accordingly. So we have attached everything which is required to preparation, which is required to prepare for Cognizant. So link of this mock test series will be in the description. Cognizant GenC mock test series, okay. And now I will be solving the communication assessment through our Cognizant GenC mock test series only. So you will get an idea like how the communication assessment will be looking like. So let's start. So this is our course. So first of all, talking about the pattern of the communication assessment. First, there will be the reading section and listening. So in this section, what will happen is, let's understand about it. See, there will be total 23 questions. Generally, in these 23 questions, there will be around 13 questions which will be read and repeat. So we will be starting from here only. So this is read and repeat. Now, what they will do in this section? So they will be giving you some timer, like around 15 seconds or 30 seconds you have to read the second to read the sentence, and after reading the sentence there will be the next question. What will be the instruction of this? So they will be displaying a sentence like, read the sentence below, and there will be a mic. You need to open the mic and you need to record the sentence whatever is displayed on screen. So I hope you guys are ready for this. Okay, so whatever is displayed on your screen, you need to read that out. So let's do this section practically. And again, I wanted to tell you how we are covering this section by using our KN Academy own website. And in the mock test series, if you can see here, the link will be in the description. We have the separate section of read and repeat. So I am solving this via our mock test. And if you will purchase the mock test, you can also do the same thing. So let's start. Okay, how this section will be looking like in your actual exam, what kind of questions will be there. Let's start. 1, 2, 3, ready. Can you describe your primary daily routine and how you manage your tasks? Next question. What is the most inspiring project or goal you have worked on recently? How do you usually handle difficult challenges or stressful situation at your work? What specific skills are you planning to learn or improve in coming months? Why do you think continuous practice is necessary for achieving long-term growth? Explain one major change in technology that impacted your life significantly this year. What steps do you follow when making critical decisions under higher pressure conditions? Describe a book or movie that completely changed your perspective on personal success. How do you balance your professional career growth and personal health priorities? What strategies do you use to stay focused when dealing with constant distractions? I hope now this is clear. Okay, I just have shown you how the actual read and repeat will be looking like. So basically, if you guys have seen, I just have given you a live demonstration. In your actual exam also, you will be seeing the mic button. You will be seeing the question like, read the question displayed on the screen, and you need to read the same question, which I did. Okay. The one important thing which I wanted to cover also, that there will be one by one questions like this. There will be around 13 questions. Okay. There can be the one liner questions.
and there can be maximum two-liner questions as well, which you need to read. So I hope this thing is clear. Read and repeat. Okay. Now we will move forward with listen and repeat. Now this is a very important section because see, in listen and repeat, in listen and repeat, okay, what is the issue? What is the issue? Okay, basically the issue is, the first issue is accent. So there can be multiple accents, okay, and there will be around 10 questions around it. So there can be Indian accent, there can be US accent, UK accent, Ireland accent, okay. The main issue is, first is the length of sentence. For some sentence the length will be like short. For some sentences the length will be big. So remembering the sentence with a long length and different accent is definitely difficult, right? That's why this section, which is listen and repeat, is little bit difficult. In this you need to do a lot of practice. However, for practice we have provided 60 questions. For practice in our mock test series, I will be solving the questions here, so you will get an idea what kind of questions will be there. Okay. But before solving, must remember this thing, that you will be seeing the audio button through which you can listen the audio. The thing is, you can play the audio only one time. And whatever you are listening, after listening that, you need to repeat the same thing. You need to repeat the same thing. Okay. So this will be your listen and repeat. So let's start on our own website. Also, you can purchase the mock test series and you will be also getting the same facility. So let me show you the listen and repeat, how we have included in our courses. Okay. There is a play audio button. There is a record answer button. I will be listening an audio. You will be listening an audio. After listening the audio, we need to provide the answer. So let's play the audio. Please forward the complete agenda to all meeting participants before noon. Please forward the agenda to all leading participants before noon. Please forward the complete agenda to all meeting participants before noon. ये है correct sentence. This is the right correct sentence. Okay. So I hope you guys understood. Okay. So I hope you guys already listened like what they have said. Okay. If you have not listened, let me. Okay. I hope the audio you guys already have listened. Let me check again. The project deadline has been extended by 2 additional business weeks. The project deadline has been extended for additional 2 weeks. Okay, so the correct sentence, the project deadline has been extended by 2 additional business weeks. Okay, I am not telling my capacity. I know I am just doing trash here, but I'm just telling you what kind of questions, what kind of audios you will be listening that we have implemented on our website. Okay, you can listen the audio, and after listening the audio you need to give the answer. So this is the correct answer. Okay, let's move forward with the next question. She submitted her detailed quarterly sales report earlier than expected today. She submitted her quarterly report earlier before the whatever it is. I don't remember. She submitted her detailed quarterly sales report earlier than expected today. Okay. So see, I just wanted to tell here, these are little bit bigger sentence what you will be actually getting in your exam. Why we have actually uh, placed the little bit bigger sentence here for practice, just because one thing, because we wanted to make sure that if you are going with this, you are practicing the things with this. Okay, the actual exam will be looking very easy to you. That's why we have included a little bit big sentences here, okay, in our mock test. Let's go forward All with the new next employees question. must complete the mandatory safety training by Friday. Now you need to give the answers. Okay, I am just playing the audios. Now you need to give the answers. Okay, so all new employee must complete the mandatory safety trainings by Friday. Next question. Now just try it, okay, and give the answers. The international client called to reschedule the final presentation for next Monday.
The international client want to call to reschedule the final presentation for next Monday. We need to thoroughly review the contract terms before signing anything official. We need to thoroughly review all the contract terms before signing the anything official. We need to thoroughly review the contract terms before signing anything official. Okay, next question. The annual budget for the new marketing initiative was approved yesterday. The new the annual budget for the new marketing initiative I approved yesterday. Please ensure that all business travel receipts are submitted within 30 days. Please ensure that all business travel receipts are submitted within 30 days. The software update will be automatically deployed across all server networks tonight. The software update will be automatically deployed across all server networks tonight. Please enable two-factor authentication on your primary account as soon as possible. Please enable two-factor authentication on your primary account as soon as possible. Okay. So those questions, so 10 questions I have shown you. Okay. These kind of 60 questions for practice we have added. Okay. If you will practice these 60 questions now, at least you will be developing an idea like how to improve your memory, how you can remember the sentence. So when you will be going to the actual assessment, you can improve your thinking capabilities. Okay. Also some reference videos also we have added, so you will get an idea like what kind of sentences they do ask. But I hope you got the actual idea what kind of listen and repeat sentence you will be getting. Okay, and this will be your second section. Around 10 questions you will be getting from here. I hope you guys are enjoying this video because we have built the own infrastructure of communication assessment. You cannot get this infrastructure anywhere. Okay, so that student lacks the communication assessment practice capabilities, but we have included this. We built our own system. We have provided our own system to practice these things to the students in our Cognizant GenC mock test. Okay, talking about the next section. Okay, so first section I hope you guys got it. Okay, that is reading and listening. Second is speaking. So this section will be also very good. So we also added the speaking section in our practice section. Okay, we will be including some more questions here, but in the speaking section the actual thing is you will be getting 30 seconds to think about the topic. Okay, so only in 30 seconds you need to think about the topic, then you will be speaking on that topic for next 60 seconds. So for 30 seconds you will be basically reading the topic, you will be thinking about the topic. Next 60 seconds you need to speak on that particular topic. So those kind of four questions you will be getting, okay, in your exam. So let's practice this. I will be giving only one answer. After that, you need to do it on your own. Okay. So let me show you one. So this is the speak on topic practice. Let me open this one. And see, I'll be showing you like one question with the answer. Then you need to um, speak on your own. Okay. So I have already written the answer. Okay, so how we have provided our speak on topic, please see here. So this is the interface which we have provided. Okay, so I will click on start practice. Describe an effective leader or manager you admire. This is my topic. Okay, describe an effective leader or manager you admire. Points to cover: who this person is, how you know them, key leadership qualities they possess, how they motivate and support their team, a specific example of their good leadership. So these kind of some points which you can cover, they have mentioned already. Okay, I'm just providing you answer. Okay, maybe that answer do not cover
everything which I have mentioned, but just a sample answer. So now the timer is start for 60 seconds. Okay. I truly admire my manager Sid at Deloitte. He has become a mentor who not only taught me technical skills but also guided me in non-technical areas like communication, teamwork, and leadership. His support has helped me grow both professionally and personally. What I value most is his patience and willingness to share knowledge, making complex concepts simple and practical. Sid's encouragement has boosted my confidence and inspired me to take on new challenges. I feel grateful to have a manager who invests in my growth and set an example of how a leader should empower their team. They support their team by constantly giving them bonuses, encouraging them verbally. I think this is everything, right? So जैसा कि you can see here, there was a 30 seconds timer given in which we need to think about the topic, then 60 seconds were given to speak on the topic. Now this is the second topic. What are the advantage and challenges of working remotely? Flexibility and saving travel time daily, impact of work-life balance and focus, potential challenges like feeling isolated, your opinion on future office work culture. These things we need to cover, okay? And this is the topic, like advantages and challenges of working remotely. Okay, so now we need to speak on this topic for 60 seconds. You guys can speak. Okay, so definitely the first point is flexibility and saving travel time daily. So basically you can mention that working remotely helps us to give us flexibility in which we can schedule our time according to our needs. Also it saves our daily travel time, which saves our time as well as our expenses. And work life balance, we can balance it more because we can adjust if we are working remotely, and we focus more on balancing the personal life with our professional life. The potential challenge is the feeling of isolation because we cannot meet new people, we cannot make friends. Also it take time to schedule the virtual meetings, and we can in person directly meet them. Okay, and for future office culture, the hybrid culture is best because through that we can balance the flexibility and the isolation factor. ओके, आई होप 1 मिनट में आपको समझ में आ गया कि कैसे थोड़ा बहुत आप बोल सकते हो. ठीक है, आई नो I did bad, but I was just giving you example. It is not my exam, it is your exam. Next is this one: discussion a technology that that significantly changed your life. Some points you need to cover, then you can speak for 60 seconds. So this kind of practice we already provided in our mock test. Okay, currently we have provided only 4 questions. Today we will be including more 4 questions like this so you can practice. Okay, so this kind of things we are already doing in our mock test to practice, and definitely it will help you out a lot because see, this section is also difficult in communication assessment. I already showed you the practical example how the things perform. Okay, next one. Okay, next one, coming to the next one. Next one is grammar 34 questions. Okay, so let me show you directly what kind of things you can face in grammar. So let me show you any mock test. So let me open the mock test, suppose this one only, articles. Okay, so if you guys can see here the timer is ongoing. Okay, I have a question. Here the timer is ongoing. I can choose the answer. He returned after an hour. Okay, so this way I can mark the correct MCQ. I can click on save and next, and I will go to the next question. Then after dash fourth lesson, English students have dash break off dash hour and dash half of dinner. So now you can see like what kind of answers we need to give. Okay, I am just picking any random answer here. Okay, so this kind of questions, like these questions are on article. So I can click on save on next. I will go on next one. Here also I can pick some sentence. Okay, I'm just picking randomly. Okay, then again I will pick any random answer. I will click on save on next. So this kind of fill in the blanks will be there. Now the point is, sir, only fill in the blanks will be there? No. So basically there will be majorly there will be fill in the blanks. There can be grammar like error correction questions also. Okay, there can be active passive,
and there can be direct, indirect. Okay. For fill in the blanks, you will be getting majorly questions on fill in the blanks. We have included one sheet as well in our course. Let me show you. This is the sheet for fill in the blanks. Okay. In which you will be getting around 300 fill in the blanks. Okay. For your practice, if you guys can see here. So there will be around 300 questions of fill in the blanks, which you can practice because there will be majorly questions from fill in the blanks. Apart from this, you will be getting the grammar error correction type of questions, active passives, and direct indirects. So these are the grammar question for 34C. You don't need to particularly practice these things much because see there are a lot of grammar rules, and if you will do practice this separately, it will waste your time. Okay, it will waste your time because there are a lot of grammar rules. You need to solve the 34 questions majorly if you will even do well. Like suppose I'll say you are preparing hard for this one. Majorly the only performance difference which I can see is 5 to 10 questions which you can maybe do correct. Okay, but the major thing is what you already have done in English that will help you out right now, because we don't have much time to give to the grammar or this thing. Okay, so we can take a risk and we can solve the grammar at that moment. But see, if your grammar is weak, definitely I would suggest you to go with the sheets, go with the fill in the blanks, go with the practice. Otherwise it is fine if you can ignore, but active, passive, direct, indirect, basic rules you can see. Let's go with the next section. So next section is passages. Again, a great section. Okay. So basically, in passages, what is the difference between reading comprehension and listening comprehension? In this section, in reading comprehension, what we did is we see the 6 to 7 line passage. After seeing 6 to 7 line of passage, there could be some possible questions like 2 to 3 questions which will be given on that particular passage. Whatever we have read in passage, based on that we will give the answers to MCQs. Now there is a difference. The same thing we will be doing in the listening comprehension, in which we will be listening we will be listening the passage, and after listening the passage we will be giving the answers. This is the only difference. There we were reading the passage, here we will be listening the passage, and after listening the passage we will be giving now. Simple. Okay, so let's see this section. It is also a difficult section, you can say. Okay, so this is passage answers. Okay, let's start. There will be 8 paragraphs, 2 MCQ per paragraph. Let's start. I have the play audio button here. The City Council recently announced a new initiative to convert unused vacant lots into vibrant community gardens. Local residents are encouraged to volunteer their time to plant vegetables, flowers, and fruit trees. This project aims to increase green spaces while fostering a stronger sense of neighborhood connection. Funding for seeds and tools will be provided through a state environmental grant. City officials hope that these gardens will also offer fresh produce to low-income families in the area. So now the paragraph is finished. Okay, so whatever you have listened in the paragraph, now you need to answer the questions basically. Okay, after listening the paragraph. So you have listened the paragraph, you will be seeing the question. I too forgot what I have listened. Okay. So the first question is, what is the main goal of converting vacant lots into community gardens? To construct new residential apartments, to increase green spaces and neighborhood connection, to build commercial parking spaces, to host private weekend events. Okay. So let's choose the option. Second one, how will seeds and gardening tools will be funded? Through local tax increases, by charging entry fees to resident throughout a state a government grant, via private loans. Okay, so whatever I have listened in the paragraph, I'll assume these are the answers and I will just submit. So if you can see here, both answers are right. Okay, both answers are right. Okay, so basically this is the task which you need to do. We just listened the audio, after that we are giving the answers. Let's move forward with the next one.
Solar power has become one of the fastest growing sources of renewable energy across the globe. Advances in photovoltaic technology have significantly lowered the manufacturing cost of solar panels in recent years. As a result, millions of homeowners are installing solar systems to reduce their electricity bills and carbon footprint. Governments are supporting this transition by offering tax incentives and rebates to early adopters. However, storage capacity during cloudy days remains a key engineering challenge. Okay. We have listened to the paragraph. Why have solar panels become more affordable recently? Decreased global demand of electricity, advances in photovoltaic technology, subsidies from international oil companies, a drop in home construction cost. Okay, what is mentioned as a key remaining challenge for solar power? Lack of government interest, high maintenance cost, energy storage capacity during cloudy days, difficulty transporting solar panels. So whatever we have felt right, we will be picking that option. We will be clicking on submit answers. So I hope now this is clear. What kind of listen and repeat, listen and giving the answers of the paragraph you will be seeing. And majorly when you will be practicing this now, you cannot see the questions in actual exam. Basically, you will be listening the paragraph, and after listening the paragraph, you need to answer of the MCQs. These kind of paragraphs you will be getting in your actual exams. Okay. So I hope this is now clear. Okay, the assessment whole pattern I have shown you. Practical demonstration, how the actual questions will be looking like, I have shown you. I don't think now you needed any guidance. Okay, like what are the sections, what will be the pattern? I hope this is clear. Okay, and you can also practice using the actual like website, okay, from our mock test series. So basically we have provided all these mock tests for practice. We have also provided the combined test, okay, so if you want to give all them together, so we have provided the 5 mock tests, okay, of communication assessment, and I will be adding some more. Okay, I will be adding some more communication assessment practice, so don't worry about it. So I think this will help you a lot. And apart from this, we have all the previous year questions of aptitude. Okay, we have the previous year questions of technical assessment. Okay, we have that, we already included that here. So this will help you a lot. Okay, so you can purchase our mock test series. Thank you so much for watching. I hope the communication assessment is clear. Now let's talk about the aptitude section. In the aptitude section, it is divided into total 2 parts. One is 30 questions in 30 minutes. Okay. And there will be the quantitative aptitude questions from that. And there will be 4 games which you need to solve in 50 minutes. Now, to clear the aptitude section, there will be different levels in the game. So basically, per game, there will be multiple levels which you need to achieve if you want to clear this round. And for aptitude section, out of these 30 questions, you need to aim at least 22 plus questions to solve this. Now to get an idea what kind of questions will be there, let's check this section. आ ही गई है, सो अब इनको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, और ये होने वाली है हमारी फ्री सीरीज कॉग्निजेंट के लिए, क्योंकि हम यूट्यूब पे अपलोड कर रहे हैं. सो अगर ये फ्री सीरीज है तो आपके 2 दायित्व बनते हैं. फ्यूचर में और भी वीडियो आएंगी कॉग्निजेंट के ऊपर के. पहला तो आप इस वीडियो को लाइक करो. सेकंड चीज कि मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि जितनी भी वीडियोस आएंगी ना फ्री सीरीज की, वो आपसे मिस नहीं होंगी. सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब. अब मेन बात आती है कि भैया ये चीज तो ठीक है, बट हमें तो और प्रैक्टिस करनी है. हमें टाइमर के साथ प्रैक्टिस करनी है, हमें पीवाईक्यू के सॉल्यूशन भी चाहिए, पीवाईक्यूज भी चाहिए, टाइमर भी चाहिए, टेक्निकल असेसमेंट भी प्रैक्टिस करना है. तो सब मैं आपको दिखाऊंगा कैसे करना है. आपको देखो, सबसे पहले आप देख सकते हो तो यहाँ पर ये जो पीवाईक्यूज हैं ये पूरे सॉल्यूशन के साथ यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है. और ये जो पीवाईक्यूज हैं ये आपको मिल जाएंगे कॉग्निजेंट जेंसी मॉक टेस्ट के अंदर. इसके अंदर हमने सब कुछ प्रोवाइड करा रखा है विच इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फॉर कॉग्निजेंट जेंसी. आप सीधे सीधे इस वाले सेक्शन में चले जाना विच इज एक्चुअल प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन. इसमें आपको कोडिंग के पीवाईक्यू मिल जाएंगे विद सॉल्यूशन, आपको एप्टीट्यूड के पीवाईक्यू मिल जाएंगे विद सॉल्यूशन, एसक्यूएल के मिल जाएंगे, वेब बेस्ड के मिल जाएंगे, कंप्लीट सेट्स मिल जाएंगे. सब कुछ आपको इसमें मिल जाएगा प्रीवियस ईयर का. अब प्रीवियस ईयर तो ठीक है, बट भैया हमें प्रैक्टिस करनी है. तो प्रैक्टिस करने के लिए टाइमर के साथ आपको यहां पर क्वेश्चन मिलेंगे. जब आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस एप्टीट्यूड, इस वाले सेक्शन में आपको विद टाइमर मिलने वाला है. मतलब आप टाइमर देख पाओगे, टाइमर के साथ आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, बिकॉज टाइमर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, राइट. इसके अलावा फॉर टेक्निकल असेसमेंट सारे प्रीवियस ईयर इंक्लूडेड है.
सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अलावा यू विल बी गेटिंग मल्टीपल इंटरेक्टिव वेबसाइट फॉर प्रैक्टिस, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर आप इंटरेक्टिवली प्रैक्टिस कर पाओगे क्वेश्चंस को, ठीक है। इसके अलावा यू विल बी गेटिंग द एसक्यूएल शीट, ठीक है, तो एसक्यूएल की आपको शीट मिल जाएगी, कोडिंग की शीट मिल जाएगी, प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। और मोर देन इनफ रिसोर्स आपको मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे, मोर देन इनफ आपको मिलेगा सॉल्व करने के लिए, ठीक है। एंड गेम बेस्ड एप्टीट्यूड के लिए आपको गेम बेस्ड के लिए पीडीएफ्स मिल जाएंगी, वेबसाइट मिल जाएगी गेम बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए, मॉक टेस्ट मिल जाएगा, सब कुछ आपको मिल जाएगा। सो अगर आप कॉग्निजेंट के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, कम्युनिकेशन टेस्ट भी अगर आपको प्रिपेयर करना है, सब कुछ अवेलेबल है। आपको कुछ नहीं करना, आपको इस सीरीज को परचेज करना है, और इस सीरीज को परचेज करके यू कैन प्रिपेयर फॉर कॉग्निजेंट। इसमें सब कुछ अवेलेबल है विच इज रिक्वायर्ड टू क्रैक कॉग्निजेंट जेंसी। सो यू कैन परचेज द कॉग्निजेंट जेंसी मॉक टेस्ट सीरीज, द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। लेट्स स्टार्ट विद अवर एप्टीट्यूड सीरीज जो कि फ्री होने वाली है यूट्यूब के ऊपर। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ये सारे प्रीवियस ईयर के एग्जैक्ट क्वेश्चन है, मैं अगेन आपको बता रहा हूं, प्रीवियस ईयर के एग्जैक्ट क्वेश्चंस ये आपके होने वाले हैं। दीज आर द एग्जैक्ट क्वेश्चंस, ओके, ऑफ प्रीवियस ईयर। सो लेट्स स्टार्ट। Fifth 12 of the first number is equal to 45% of a second number. The second number is 20% less than a third number. If the second number is 1600, which find the sum 80% of the first number and 37.5% of the second number, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं, लास्ट में ये पूछ क्या रहा है, फाइंड द सम ऑफ 80% ऑफ द फर्स्ट नंबर, ठीक है, एंड 37.5% ऑफ द सेकंड नंबर। मतलब हमें फर्स्ट नंबर का सम चाहिए और सेकंड नंबर का सम चाहिए, तो भैया थर्ड नंबर का तो कोई काम ही नहीं है। तो ये जो थर्ड नंबर इन्होंने मेंशन किया है ना, ये कुछ नहीं है, ये बस टाइम वेस्ट है। टाइम वेस्ट करने के लिए दिया गया है, तो थर्ड नंबर हमें निकालने की कोई जरूरत नहीं है। पहले तो क्वेश्चन पढ़ के हमें ये समझ में आया, ठीक है। हमें कौन से दो नंबर निकालने हैं, फर्स्ट नंबर निकालने हैं और सेकंड नंबर निकालना है, ठीक है। अब अगर हमें फर्स्ट और सेकंड नंबर निकालना है, ठीक है, तो उसमें अगर आप देख सकते हो तो सेकंड नंबर तो हमें दिया हुआ है, तो सेकंड नंबर तो हमें निकालना ही नहीं है। इसमें लिखा है इफ द सेकंड नंबर इज 1600, 1600 सेकंड नंबर है, तो फर्स्ट नंबर क्या होगा, फिफ्थ 12 ऑफ द फर्स्ट नंबर इज इक्वल्स टू द 45% ऑफ द सेकंड नंबर। सो सबसे पहले इसका 45% निकाल लेते हैं, तो क्योंकि ये तो क्वेश्चन में कह रहा है, तो इसका जो सेकंड नंबर का जो 45% है वो कैसे निकालेंगे। अब यही कैलकुलेशन की ट्रिक्स हैं जो आपको माइंड से करनी है। देखो इसका 50% कितना हो जाएगा, 800, ठीक है। और अगर इसका आप 10% निकालोगे तो कितना आएगा, 160। अगर 10% 160 है तो 5% कितना होगा, 80 रुपए। तो 50% में से 5% हटा दें अगर हम, दैट मीन्स 80 में, अगर 800 में से 80 हटा दें तो कितना बचा, 720। तो ये कितना हो जाएगा, 45%। कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आप माइंड में ये कर सकते हो, और यही चीज आपको सीखनी है, क्योंकि टाइम आपके पास बहुत कम होता है। तो ये अपन फटाफट से कैलकुलेट कर लेंगे, राइट। क्योंकि जैसे ही उन्होंने बोला कि 45% ऑफ सेकंड नंबर्स, तो ये हमारे दिमाग में चलेगा कि भाई इसका जो 50% है वो होगा 800 रुपए, 45 कितना होगा, 720 रुपए, क्योंकि 80 रुपए का 10% है, ठीक है, 5% है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया कि 720 रुपए हमारे पास ये आ गए, विच इज 45% ऑफ दिस नंबर, ठीक है। अब ये कह रहा है फिफ्थ 12 ऑफ द फर्स्ट नंबर, लाइक फिफ्थ 12 ऑफ द फर्स्ट नंबर, ठीक है। सो फिफ्थ 12 ऑफ एफ, ठीक है, फिफ्थ 12 ऑफ एफ इज इक्वल टू 720, ये बोल रहा है। सो फर्स्ट नंबर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 720 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइड बाय 5, इसको काटा पीटी कर लेते हैं, 144 मल्टीप्लाई बाय 12, ये आ जाएगा नंबर। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1728, ठीक है। तो 1728 ये हमारा आ गया क्या, फर्स्ट नंबर, ठीक है, ये आ गया फर्स्ट नंबर। अब ये क्या कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ द 80% ऑफ द फर्स्ट नंबर। सो 80% ऑफ द फर्स्ट नंबर हमें निकालना है। तो सबसे पहले अगर इसका हमें 80% निकालना है, सो 1728 में हम मल्टीप्लाई कर देंगे 0.8 का। जब 0.8 का हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 80% आ जाएगा। तो जो भी 80% का नंबर आया, दैट इज दिस वन, 1382.4, ठीक है। एंड हमें क्या निकालना है यहाँ पर, 37.5% ऑफ द सेकेंड नंबर। सो 37.5% आ जाएगा इसका, ठीक है। तो 37.5% इसका कितना आ जाएगा, 600 रुपीज। अब इन दोनों का लास्ट में हमें सम निकालना था, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, 1380 प्लस 600 इज इक्वल टू 1982। सो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही आपको ऑप्शन में दिख जाएगा 1982.4, दिस विल बी योर आंसर, ओके। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन हाउ मेनी वेज यू कैन, इन हाउ मेनी वेज can a company select a team consisting of 4 men and 3 women from 8 men and 7 women। ये प्रीवियस ईयर में आया था, और इस प्रकार के दो क्वेश्चंस आए थे, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस। तो मेरे हिसाब से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिंपल क्वेश्चन है बहुत ज्यादा, 1 मिनट में इजीली कर सकते हो आप। ये कह रहा है इन हाउ मेनी वेज we can a company select a team consisting of 4 men and 3 women from 8 men and 7 women। सो 8 लड़कों में से 7 लड़के चूज करने हैं। सो 8 लड़कों में से 7 लड़के कैसे चूज होंगे, 8C4, ठीक है। या हम बोल सकते हैं
एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, इतने वेज यहां पर होंगे, इतने वेज होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है, सिलेक्ट करने के। और ठीक है, और क्या कह रहा है कि 7 वुमन्स में से कितनी सिलेक्ट करनी है, 7 वुमन में से 3 वुमन हमें सिलेक्ट करनी है। सो वो क्या होगा, उसका हो जाएगा एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय एन माइनस आर, यानी कि 4 फैक्टोरियल। ये हमारे पास आ गया, इसको काटा पीटी करके सॉल्व करना है बस। सो 8 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा अपन का, यहां पर अगर हम सॉल्व करें तो 8765। ठीक है, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल चला गया उसका। ठीक है, और ये 7 फैक्टोरियल अगर अपन को हटाना हो तो ये कैसे हो जाएगा अपन का 765। तो इस एक और ये 4 फैक्टोरियल से वो वाला 4 फैक्टोरियल अपन का चला गया। नीचे क्या बचा अपन का 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल, इसको सॉल्व कर लेंगे अपन। ठीक है, 3 फैक्टोरियल से अपना 6 चला गया, 4 फैक्टोरियल से अपन का चला गया 4 फैक्टोरियल से अपन का ये एक तो 2 टाइम्स 8 चला गया, फिर कितना बचा 3 और 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया और 3 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गया। तो अब बस ऊपर वाला मल्टीप्लाई कर लो, ऊपर वाला मल्टीप्लाई जितना भी आएगा वो हमारा आंसर है। तो ऊपर वाला मल्टीप्लाई करके जो आंसर आ जाएगा दैट इज 2450। सिंपल। ठीक है, सो बेसिकली हमने क्या किया, 8C4 ये तरीके थे मेन सिलेक्ट करने के, 7C3 ये तरीके थे वुमेन सिलेक्ट करने के, दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, इतने तरीके दोनों हमारे बनेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। द सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज 45। दो पॉजिटिव नंबर का जो सम है 45 है, डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर इज 1665, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर दो पॉजिटिव नंबर का जो सम है वो 45 है, दैट इज x प्लस वाई इक्वल्स टू 45 हो गया। ठीक है, एंड डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर इज 1665, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, राइट, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जिसको हम बोल सकते हैं एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी दी हुई है यहाँ पर 45। सो 45 एक्स माइनस वाई। ठीक है, और कितना हो गया ये 1665। ठीक है, इससे इसको सीधे सीधे कैंसिल कर देंगे, इसको इससे सीधे सीधे कैंसिल कर देंगे तो कितनी बार चला जाएगा 37 बार। सो x माइनस वाई इक्वल्स टू हो जाएगा 37। अब जब x माइनस वाई की वैल्यू हमारी 37 आ गई है तो कह रहा है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। ठीक है, सो फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर हमें निकालना है। तो देखो जब इसको आप सॉल्व करोगे अगर आपको इसको सॉल्व करना है दैट इज x माइनस वाई इक्वल्स टू 37, और हमें x प्लस वाई कितना दिया हुआ था 45। ठीक है, इसको अगर आपको सॉल्व करना है तो 2x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, दोनों का अपन सम कर देंगे। सो दोनों को जब आप सम करोगे तो ये अपन का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपन का 82। ओके, सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी अपन की 41। सो x की वैल्यू 41 आ गई तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई 41 और y की आ गई 4। ठीक है, अब दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा 41 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, आंसर आ गया 164। सिंपल। सो ये सिंपल सा क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था। अगला क्वेश्चन करते हैं। अ टैग कंटेन्स 80 liters of a mixture of milk and water in the ratio of 7:3। If x liter of pure milk is added to the mixture, the resulting mixture contains 85% of milk, find x। एक टैंक है जो कि कंटेन कर रहा है 80 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर। मतलब भैया देखो ये है टोटल अपन का 80 लीटर, और इसमें दो चीजें मिल रही हैं, एक तो मिल्क मिल रहा है और एक इसमें क्या मिल रहा है वाटर। किस रेशियो में मिल रहा है 7:3। अगर 7:3 में मिल रहा है तो टोटल कितनी हुई क्वांटिटी 10। 10 में से जो 7 पार्ट्स जा रहे हैं वो किसके जा रहे हैं मिल्क के, और 3 पार्ट्स जो जा रहे हैं वो किसके जा रहे हैं वाटर के। इतनी बात समझ में आ गई। टोटल पार्ट्स कितने हैं 10, 10 में से 7 पार्ट्स जा रहे हैं मिल्क के और 3 पार्ट्स जा रहे हैं वाटर के। ठीक है, टोटल कितना मिक्सचर दिया हुआ है हमें 80 लीटर का। अब ये कह रहा है कि इफ x लीटर ऑफ वाटर इज एडेड इनटू द मिक्सचर। ठीक है, तो सबसे पहले अगर 10 पार्ट्स, ध्यान से सुनना, टोटल कितने हैं 10 पार्ट्स और है कितना 80 लीटर, मतलब एक पार्ट कितने का हुआ 8 का हुआ। अगर एक पार्ट 8 का हुआ और 7 पार्ट्स मिलके तो 7 8 56, 56 मिल्क हो जाएगा। ठीक है, 56 अपना मिल्क हो गया, और वाटर कितना होगा 80 माइनस 56, यानी कि कितना हो गया अपन का वाटर 24। ठीक है, तो ध्यान से मैं यहां पर लिख लेता हूं, मिल्क कितना हो गया अपन का 56 और वाटर कितना हो गया अपन का 24। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि अगर अपन एक्स पार्ट्स ऐड कर दें मिक्सचर में तो जो रिमेनिंग मिक्सचर है उसमें 85% मिल्क रह जाएगा। ठीक है, 85% ऑफ मिल्क यहां पर रह जाएगा। ठीक है,
सो रेशियो में जिसमें दिया है उसी में तो ये कह रहा है ये बात, ठीक है, कि अगर हम एक्स पार्ट्स हम जो मिल्क है उसको अगर हम ऐड कर दें तो जो रेशियो बचेगा वो कितना बचेगा, 85% का रेशियो बचेगा, 85% का रेशियो बचेगा, ठीक है। सो अगर 85% प्योर मिल्क बचेगा, या आप बोल सकते हो कि 85% यहां पर बचेगा, तो हम डेफिनेटली ये बात कर सकते हैं 85% किसका बचेगा। देखो 85% बचेगा आउट ऑफ 100, सो हम बोल सकते हैं 85 डिवाइड बाय 100, आउट ऑफ 100 कितना बचेगा, 85 बचेगा। कब, जब हम एक्स पार्ट्स ऑफ मिल्क जोड़ दें, ठीक है, और एक्स पार्ट्स ऑफ मिल्क किस में जुड़ेगा, एक तो मिल्क में जुड़ गया और जो टोटल मिक्सचर है उसमें भी जुड़ जाएगा, सो 80 प्लस एक्स, ठीक है, जितना हम मिल्क में जोड़ रहे हैं उतना ही टोटल में जुड़ जाएगा, तो दिस इक्वल्स टू दिस दिस हो जाएगा, सिंपल सिंपल। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, सो दैट इज 56 प्लस एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा 68 प्लस 0.85 एक्स। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.15 एक्स इक्वल्स टू 10, और एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80, ठीक है। दैट मीन्स 80 लीटर्स हमने ऐड किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। स्टूडेंट सोल्ड हिज लैपटॉप फॉर 18,000 इंकरिंग अ लॉस ऑफ 10%। अगर 18,000 का बेचा है, देखो दिमाग लगाओ, 18,000 का अगर बेचा है और 10% का लॉस हो रहा है, जनरली 10% का लॉस अगर 20,000 रुपए पर होगा तभी तो 18,000 होगा, ये तो आपका दिमाग में आ ही जाएगा, क्योंकि 20,000 का 10% कितना होता है, 2,000 रुपए, ठीक है। तो ये तो शायद कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है, बट अगर कैलकुलेट करना हो तो सिंपली हम 18,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 90 कर सकते हैं, तो ये 2 टाइम्स चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा अपन का, ये हो जाएगा अपन का 2000, ऐसे 20,000, ये भी ऐसे भी आप निकाल सकते हो, बट ये तो कॉमन सेंस है, ठीक है, कि आप सीधे भी निकाल सकते हो उसको, राइट। सो इसमें लिखा है कि ए स्टूडेंट सोल्ड हिज लैपटॉप फॉर 18,000 इंक्लूडिंग अ लॉस ऑफ 10%, मतलब जो कॉस्ट प्राइस होगी वो कितनी होगी, 20,000 की, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस आ गई 20,000 की। एट व्हाट प्राइस शुड ही हैव सोल्ड इट टू गेन 18%। अगर 18% का उसको प्रॉफिट चाहिए तो इसको किस प्राइस पे उसको सोल करना चाहिए। तो अगर इसको सेल करना चाहता है वो 18% के प्रॉफिट के साथ, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कई तरीकों से आप इसको निकाल सकते हो। पहला तरीका तो ये हो गया कि भैया अगर इस पे 18% का प्रॉफिट चाहिए, सो वी विल बी डायरेक्टली मल्टीप्लाइंग इट बाय 1.18, क्योंकि 1 क्या होता है, 100%, और इसकी प्राइस हम 18% से बढ़ा रहे हैं। तो अगर 18% से बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब वो प्राइस जो है वो कितनी हो जाएगी, 118%, या 118% को हम क्या बोल सकते हैं, 1.18। सो 1.18 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सीधे सीधे 1.18 से मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या आ जाएगा, 23,600, ठीक है। एक और तरीके से कर लेते हैं भैया कि 20,000 अगर कॉस्ट प्राइस है और कितनी बढ़ानी है हमें, कितनी बढ़ानी है, 18%। 10% अगर बढ़ाएंगे तो कितनी बढ़ेगी, 10% से कितने बढ़ जाएगी, 2,000 बढ़ जाएगी, तो 22,000 रुपए हो गई। कितनी बढ़ानी है, कितनी बढ़ानी है, 8% और बढ़ानी है। 1% कितने का है, 1% है 2,000, 200 रुपए का। अगर 1% 200 रुपए का है तो जो 8% होगा होगा वो कितने रुपए का होगा, 1,600 रुपए का। सो 22,000 में 1,600 और जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 23,600 रुपए। आंसर आ गया। कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, सीधे सीधे मन में ही कर लेंगे, ठीक है। सो इससे हमारा जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 23,600। क्वेश्चन देख रहे हो, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे, राइट। अगर अपन ने थोड़े और सॉल्व कर लिए ना तो आपको एक अच्छा आइडिया लग जाएगा कॉग्निजेंट में जाने से पहले। नेहा अलोन कैन कंप्लीट अ प्रोजेक्ट इन 30 आवर्स, ठीक है। अगर नेहा किसी प्रोजेक्ट को 30 आवर्स में कंप्लीट कर रही है तो उसकी रेट क्या होगी, ये चीज तो आपको पता होगी कि अगर 30 आवर्स में उसका वर्क कंप्लीट हो रहा है तो रेट होगी यहाँ पर 1/30, क्योंकि टाइम के अपोजिट चलती है, ठीक है, वर्क उसके अपोजिट चलता है। सो 1/30 इसकी रेट हो गई काम करने की, नेहा की, किसी एन की रेट हो गई 1/, इसको छोटे में ले लेते हैं, इससे यहीं पे सॉल्व हो जाए, ठीक है, ठीक है। सो नेहा की रेट कितनी हो गई, 1/30, ठीक है। नेहा एंड रिया टुगेदर कैन कंप्लीट इट इन 12 आवर्स, दैट मीन्स एन प्लस आर, ये कर सकते हैं कंप्लीट 12 आवर्स में, मतलब 1.12 इनकी रेट हो गई, ठीक है। अगर 1.12 रेट नेहा एंड रिया की है एंड 1/30 अगर नेहा की है, तो अगर हमें रिया की निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, इस वाली रेट में से इसको माइनस कर दो तो रिया की आ जाएगी, सिंपल। सो 1/12 माइनस 1/30 कर लें। अगर 1/12 माइनस 1/30 कर लिया तो ये किसकी आ जाएगी, ये रेट आ जाएगी रिया की, ठीक है। नेहा, रिया एंड सिमरन टुगेदर कैन कंप्लीट इट in 8 hours. In how many hours can नेहा एंड सिमरन टुगेदर कैन कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो नेहा प्लस रिया की कितनी आ गई, 1/12। तो रिया की रेट हमने निकाल ली, कितनी आएगी, अभी मैंने आपको बताया 1/12 माइनस 1/30, दैट इज 120 यहां पर आ गई, ठीक है। नेहा, रिया और सिमरन 8 घंटे में पूरा कर रहे हैं तो उनकी रेट कितनी आ गई, 1/8, ठीक है। तो सिमरन की रेट कितनी होगी, सिमरन की रेट होगी 1/8,
ठीक है, क्योंकि सिमरन ही तो बची, नेहा की हमारे पास है और रिया की हमारे पास है। नेहा की रेट हमारे पास क्या दी हुई है, 1/30। ठीक है, रिया की रेट हमारे पास कितनी दी हुई है, 1/20। सिमरन की निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, 1/8 माइनस 1/30 माइनस 1/20। तो सिमरन की कितनी आ गई, 1/24। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इन हाउ मेनी आवर्स कैन नेहा एंड सिमरन कैन वर्क टुगेदर। तो इसकी है 1/24 और नेहा की कितनी थी, 1/30। ठीक है, अगर ये दोनों साथ में काम करें तो कितना टाइम लगेगा भैया दोनों को साथ में करने के लिए, तो ये काम हम यहाँ पर कर सकते हैं, 1/30 प्लस 1/24। सो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा, 3/40। तो ये तो आ गई रेट। तो अभी मैंने बताया रेट टाइम की उल्टी चलती है, टाइम रेट का उल्टा चलता है, तो टाइम कितना आएगा, 40/3, या आप बोल सकते हो 13 1/3 आवर्स। आंसर, this was the exact question which got asked. So these were the previous year questions which we solved. कुछ क्वेश्चंस को अब और आगे के पार्ट्स में भी हम सॉल्व करेंगे। बाकी यू कैन परचेज अवर कॉग्निजेंट जेएनसी मॉक टेस्ट सीरीज, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी विद ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। एंड ये चारों गेम्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। सो यहाँ पर चार गेम्स होने वाले हैं, एक है डिडक्टिव चैलेंज, दूसरा है स्विच चैलेंज, तीसरा है इंडक्टिव चैलेंज और चौथा है मोशन चैलेंज। तो ये चार चैलेंजेस आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब जनरली होता क्या है कि आपको पर गेम को खेलने के लिए 9 मिनट्स का टाइम दिया जाता है, 9 मिनट्स। अब उतने 9 मिनट्स में आप जितनी ज्यादा से ज्यादा लेवल को अचीव कर सकते हो विथ हाई एक्यूरेसी, वो आपका यहाँ पर डिपेंड करता है कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो अब आप कहोगे कि भैया 9 मिनट्स है तो 9 4 आपका कितना हो गया, 36 मिनट्स का ये राउंड होना चाहिए। बट आपको 40 इंस्ट्रक्शंस के लिए कुछ और एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है, इसलिए जो टोटल आपका ये असेसमेंट वाला सेक्शन है वो 50 मिनट्स का होता है। चार गेम्स देखने को मिलेंगे और 50 मिनट्स का ये पूरा सेक्शन होगा। जो सबसे पहला सेक्शन है वो आता है डिडक्टिव का, फिर आता है स्विच, फिर इंडक्टिव और फिर आता है मोशन चैलेंज। सो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं और सारे गेम्स को समझेंगे। सबसे पहले डिडक्टिव चैलेंज में आपको कैसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो डिडक्टिव चैलेंज में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, वो होंगे आपके बेसिकली डिडक्टिव काइंड ऑफ क्वेश्चन, जिसमें आपको एक पैटर्न फिलिंग करनी होगी, ठीक है, पैटर्न फिलिंग करनी होगी। अब जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर हम बात करें तो आपके पास सपोज 5 सिंबल हैं। अब ये जो 5 सिंबल है वो है आपका सर्कल, स्क्वायर, स्टार, ओके, एंड ट्राइंगल। ओके, तो ये आपके चार सिंबल हो गए। ओके, तो चार सिंबल हैं। अब आपको ये चार सिंबल इसमें फिल करने हैं। अब जैसे इसमें क्वेश्चन मार्क का आंसर पूछा हुआ है, बट हम पूरा फिल करके एक बार चेक कर लेंगे। तो कैसे फिल करने के, रो और कॉलम में, ठीक है, सेम सिंबल नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर स्टार है, ट्राइंगल है और सर्कल है, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा स्क्वायर, ठीक है, बाकी और कोई सिंबल नहीं आ सकता। तो ये डिडक्टिव चैलेंज के अंदर होता है। अब यहाँ पर स्क्वायर आ गया, यहाँ पर स्क्वायर है और सर्कल है, स्टार है, तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, बाकी का तो बचा सिंबल है वो है ट्राइंगल, तो यहाँ पे आ जाएगा ट्राइंगल। अब यहाँ ट्राइंगल है, स्क्वायर है, सर्कल है, तो यहाँ पर क्या आएगा, स्टार। अब यहाँ पर ट्राइंगल है, स्क्वायर है, स्टार है, तो क्या आएगा, सर्कल। अब यहाँ पर सर्कल है, स्टार है, ये है, तो क्या बचा, ट्राइंगल। अब ट्राइंगल हो गया, सर्कल हो गया, अब इसको हम फिल कर लेते, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, स्टार, और यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, स्क्वायर। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर आंसर्स देने होंगे, जहाँ पर क्वेश्चन मार्क्स हैं या शुडुकू को अगर आपको कंप्लीट करना है तो ऐसा क्वेश्चन होगा। इसको सॉल्व करते हैं। ये आपका एग्जैक्ट कॉग्निजेंट का क्वेश्चन है जो मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कॉग्निजेंट में रिसेंटली। तो कैसा क्वेश्चन है, क्या है, तो इसको जरा डिस्कस करते हैं। तो देखो, इस क्वेश्चन में ये सुडोकू दिया हुआ है आपको और आपको ये जो क्वेश्चन मार्क है इसको फिल करना है, ठीक है। सो लेट्स सॉल्व दिस। सो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप्स हम करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा फिल्ड फिल्ड रो कौन सी है, और हमें टाइम भी अपना कम यूज करना है, राइट। सो सबसे ज्यादा फिल्ड रो हम देखेंगे जिससे हमें अपने पजल को कंप्लीट कर पाए। तो अगर आप इसमें देखोगे तो ये वाली जो रो है, फर्स्ट रो, इसमें हमारे पास स्टार है, प्लस है और सर्कल है, एंड ये ही सबसे ज्यादा फिल्ड रो है, ठीक है। तो जो सबसे ज्यादा फिल्ड रो है हम उसी को एज अ स्टार्टिंग पॉइंट यूज करेंगे, जिससे हमारे पजल को हेल्प हो जाए पूरा का पूरा कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा फिल्ड रो है। तो सबसे पहले इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें स्टार आ गया, प्लस आ गया और सर्कल आ गया। हमारे पास दो सिंबल्स बचते हैं फिल करने के लिए। या तो हम ट्राइंगल फिल कर सकते हैं इसमें कहीं भी, ठीक है। और ट्राइंगल के अलावा जो हमारे पास नेक्स्ट बचता है वो बचता है स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर और ट्राइंगल को इसमें हम कहीं भी फिट कर सकते हैं। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या इस जगह पर हम स्क्वायर को फिट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। बिकॉज अगर आप देखोगे तो ये जो कॉलम है इसमें ऑलरेडी स्क्वायर फिट है इस जगह पर। तो इसलिए यहां पर हम क्या फिल कर पाएंगे, इस जगह पर हम फिल कर पाएंगे
ट्राइंगल, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये स्क्वायर है। तो अगर यहाँ पर ट्राइंगल है तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा स्क्वायर इस वाले सेल में। अगर यहाँ पर स्क्वायर आ गया तो अब यहाँ पर हम ध्यान से देखते हैं, हमारे पास स्क्वायर आ चुका है और ये वाली जो रो है हमारी कंप्लीटली फिल्ड हो चुकी है। अब हमारे पास बचती है ये वाली रो, क्योंकि अब इस वाली रो में हमारे पास बेसिकली 3 सिंबल्स है, 2 खाली हैं। अब हमारे पास स्क्वायर है, सर्कल है, तो हम क्या भर सकते हैं, एक तो ट्राइंगल हमारे पास बचा है तो हम ट्राइंगल को भर सकते हैं। बाकी इसमें और भरने को हमारे पास और कौन सा सिंबल बचा है, स्टार। तो ट्राइंगल या और स्टार हमें भरना है इसमें। अब अगर आप देखोगे तो स्टार ऑलरेडी इस जगह पे दिया है। अगर स्टार ऑलरेडी इस जगह पे दिया तो इस जगह पे हम स्टार नहीं भर सकते, इसका मतलब यहाँ पर हमारा ट्राइंगल आएगा। अगर यहाँ पर ट्राइंगल आएगा तो यहाँ पर स्टार आएगा। अब हम आते हैं अपनी लास्ट रो पर, जिसमें हमारे पास यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सर्कल है, स्टार है, स्क्वायर है। अब हमारे पास फाइनल ऑप्शन क्या बचे, हमारे पास एक बचा प्लस, प्लस को हम भर सकते हैं। और प्लस के अलावा हमारे पास और क्या बचा है, प्लस के अलावा हमारे पास बचा है ट्राइंगल। ठीक है, तो ट्राइंगल और प्लस हमें भरना है। अब ध्यान से समझना, इस वाले में ऑलरेडी प्लस है, आप देख सकते हो इस वाली रो में, इस यहाँ पर स्टार्टिंग में अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी प्लस है। अगर प्लस है तो यहाँ पर हमें क्या भरना पड़ेगा, ट्राइंगल, और इस जगह पे भरना पड़ेगा प्लस। तो ये जो सिंबल है, ये क्वेश्चन मार्क है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्लस। सो दिस विल बी अवर फाइनल आंसर। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्लस। ऐसे हमें इसको सॉल्व करना है। अब हम स्विच चैलेंज के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा चैलेंज है सबसे ज्यादा बच्चे इसी में गलती करते हैं। ये सेकंड टाइप ऑफ गेम है, बाकी मैं आपको एप्टीट्यूड के लिए बता रहा हूँ, हम सारे गेम्स को तो सॉल्व कर ही रहे हैं। आप मॉक टेस्ट एक बार देख सकते हो, इसमें टेक्निकल असेसमेंट जो आपका होने वाला है उसके लिए भी जो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो आपको स्क्रीनशॉट्स के साथ मिल जाएंगे, सॉल्यूशंस भी आपको देखने को मिल जाएंगे, पीडीएफ्स प्रोवाइडेड है। और प्रैक्टिस करने के लिए आप इन पीडीएफ्स का यूज कर सकते हो प्रीवियस ईयर में जो एक्चुअल क्वेश्चंस पूछे गए थे। क्योंकि देखो आपके पास प्रिपेयर करने के लिए केवल 1 दिन या 2 दिन का ही समय है, और उस 1 से 2 दिन में आप ज्यादा तो प्रिपेयर कर नहीं पाओगे, जितना आप प्रिपेयर कर पाओगे उतना इसमें कंटेंट अवेलेबल है। जैसे एसक्यूएल के क्वेश्चंस आते हैं तो पूरी पीडीएफ अवेलेबल है क्वेरीज के साथ, राइट। और जो कोडिंग क्वेश्चंस है उनका आपका प्रीवियस ईयर अवेलेबल है, वेब बेस्ड क्वेश्चंस का प्रीवियस ईयर अवेलेबल है, स्क्रीनशॉट्स के साथ अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है। तो ये आप पीडीएफ्स का यूज कर सकते हो प्रिपरेशन के लिए, बेटर है कि आप इनका यूज करो। ठीक है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी मॉक टेस्ट की। और बाकी एप्टीट्यूड के लिए तो जैसा मैंने बताया, प्रीवियस ईयर का जो पूरा सेट है, एक्चुअल सेट, वो आपको मिल जाएगा। और प्रैक्टिस के लिए काफी सारे मॉक टेस्ट भी यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, तो स्विच चैलेंज को देखते हैं एक बार। तो स्विच चैलेंज, देखो स्विच चैलेंज जो है ना आपका, ये एक ऐसा है जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे गलती करते हैं और सबसे ज्यादा बच्चे इसमें टाइम लगाते हैं। इसको अपन फटाफट करना सीखेंगे। इसको फटाफट कैसे करते हैं, देखो सबसे पहले इन सिंबल्स का नंबर देना काफी जरूरी है, अदरवाइज आप गलती कर दोगे। तो सबसे पहले इस यहाँ पर अगर आप देखोगे तो स्क्वायर आ रहा है, स्क्वायर का नंबर हो गया 1, ट्राइंगल का नंबर हो गया 2, प्लस का नंबर हो गया 3, और सर्कल का नंबर हो गया 4। सबसे पहले हमने नंबरिंग कर ली। नंबरिंग करने के बाद हम लास्ट वाले को देखेंगे, जो भी लास्ट वाला जहां भी प्रेजेंट है उस हिसाब से वो नंबरिंग जाएगी। तो सबसे पहले क्या लिखा है, प्लस, प्लस लिखा है, तो प्लस के सामने क्या है 3, तो 3 आ जाएगा। फिर क्या आया है, ट्राइंगल, ट्राइंगल के सामने क्या लिखा है 2, तो 2 आ जाएगा। फिर क्या है हमारे पास सर्कल, सर्कल के सामने क्या लिखा है 4, तो 4 आ जाएगा। और फिर आया स्क्वायर, स्क्वायर के सामने क्या लिखा है यहाँ पर 1, तो 1 आ जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या होगा, 3 2 4 1। अब आप कहोगे भैया ये तो हम देख के भी कर सकते थे ना, बट ये एग्जाम्पल है। देख के अगर आप इसको करने की सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो कुछ ना कुछ गलती हो जाएगी, क्योंकि मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलूंगा और इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। और दिस इज द एग्जैक्ट क्वेश्चन जो कि यहाँ पर कॉग्निजेंट में पूछा गया था। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप, जो मैंने आपको ये जो एग्जाम्पल समझाया है उसमें जैसे मैंने नंबरिंग बताई है उस हिसाब से आप नंबरिंग करो। अगर आप नंबरिंग करोगे ना तो बहुत इजीली हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अदरवाइज जो डबल ऑपरेटर वाले जो होते हैं उनमें काफी बच्चे गलती कर देते हैं। अब जैसे इसमें लिखा हुआ है सबसे पहले प्लस, सर्कल एंड ट्राइंगल एंड आपका ये आ गया स्क्वायर या डायमंड, कुछ भी बोल दो आप इसको, मैं स्क्वायर मान लेता हूँ। तो प्लस के सामने हम कर देंगे 1, और स्क्वायर और सर्कल के सामने 2, ट्राइंगल के सामने 3, और इसके सामने 4। ठीक है, 1 2 3 4 आ गया। ये आपको अपने माइंड में करना है कि प्लस इज 1, सर्कल इज 2, ट्राइंगल इज 3 एंड आपका जे स्क्वायर इज 4। ओके, अब यहाँ पर लिखा हुआ है 4 3 1 2। अब 4 3 1 2 का मतलब क्या है कि हमें इसकी ऑर्डरिंग चेंज करनी पड़ेगी। अगर 4 3 1 2 लिखा है तो सबसे पहले क्या आएगा 4, मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आपका स्क्वायर। ठीक है, फिर आएगा 3, तो 3 का मतलब क्या आ जाएगा, ट्राइंगल। फिर आया 1, 1 का मतलब आ जाएगा प्लस, एंड फिर आया 2, मतलब आ जाएगा सर्कल। तो अब हमारे पास जो सिचुएशन है दैट इज स्क्वायर, ट्राइंगल, प्लस एंड सर्कल। और हमें जो पूछा गया है वो पूछा गया है कि हमें चाहिए प्लस, ट्राइंगल, सर्कल एंड स्क्वायर। तो हम इस सिचुएशन में हैं और हमें इस सिचुएशन से इस सिचुएशन में आना है।
तो उसके लिए हमें यहाँ पर इन तीन ऑप्शंस में से कोई ऑप्शन चूज करना है, ठीक है। तो अगर आपको इस सिचुएशन से इस सिचुएशन में आना है तो आपको दोबारा से अपनी जो चीजें हैं उनको रीराइट करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये इस ऑपरेशन के बाद हम इस स्टेट में ऑलरेडी आ चुके हैं, तो ये जो स्टेट है ना, अब इसको भूल जाओ, इस नंबर को भूल जाओ। आप ये समझ लो कि हम इस स्टेट में ऑलरेडी हैं और इस स्टेट से हमें ये फाइनल स्टेट में आना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी नंबरिंग करेंगे। इस पे लिखेंगे 1 2 3 और 4। अब सबसे पहले है प्लस, तो प्लस यहां पर किस नंबर पे है, 3 पे, तो क्या आएगा हमारे पास 3। अब आएगा ट्राइंगल, तो ट्राइंगल किस नंबर पे, 2, तो क्या आ जाएगा 2। अब यहां पर क्या लिखा है, यहां पर है सर्कल, और सर्कल किस नंबर पे है, 4, तो 4 आ जाएगा। और फिर लास्ट में आ रहा है स्क्वायर, तो स्क्वायर किस नंबर पे, 1, तो 1 आ जाएगा। तो 3241 हमारा फाइनल आंसर होगा। तो दैट इज 3241। सो इसको आपको ऐसे सॉल्व करना है। सबसे पहले जो भी सिंबल्स दिए हुए हैं और जो भी नंबर दिया हुआ है उस नंबर के हिसाब से उसको अरेंज करो। अरेंज करने के बाद उसकी नंबरिंग करो, और उसकी नंबरिंग करने के बाद जो भी उसका फाइनल स्टेट है उसके हिसाब से उसको उस नंबरिंग पे पुट करो। तो इसको इस प्रकार से यहाँ पर सॉल्व किया जाता है, ठीक है। ये हो गया आपका स्विच चैलेंज। अब बात करते हैं इंडक्टिव की। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है ऑलरेडी। तो इंडक्टिव का मतलब क्या होता है, पैटर्न मैचिंग। यहाँ पर आपको कुछ सिंबल्स बताए गए हैं और उस सिंबल्स के अकॉर्डिंग आपको पैटर्न मैच करना है। तो यहाँ पर अगर आप इस ग्रिड को देखोगे तो इसमें कुछ ना कुछ पैटर्न है। अब उस पैटर्न को एनालाइज करके आपको सेम प्रकार का जो ग्रिड है वो चूज करना है, ठीक है। अब अगर आप इन दोनों ग्रिड को देखोगे तो इसमें क्या पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो इसका जो डायगोनल है वो यहाँ पर पूरा का पूरा सेम है, विच इज ट्राइंगल। और इस वाले ग्रिड का जो डायगोनल है वो पूरा का पूरा यहाँ पर क्या है, सर्कल, ठीक है। तो जो डायगोनल है वो सेम सिंबल का है। अब अगर आप इनमें पैटर्न को ऑब्जर्व करोगे तो यहां पर आप देख सकते हो पूरा जो डायगोनल है वो यहां पर है प्लस, एंड इस वाले में जो पूरा डायगोनल है वो यहां पर है स्टार। मतलब फिगर 1 और 4 वो सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं जो इसमें पैटर्न दिया हुआ है। इसलिए जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, 1, 4, ठीक है। नेक्स्ट इसको सॉल्व कर लेते हैं जरा। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन है जो कॉग्निजेंट में पूछा गया था, और काफी बच्चे गलती कर देते हैं ये क्वेश्चन में, क्योंकि ये थोड़ा सा है क्वेश्चन इस टाइप का कि जिसमें काफी बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है। तो अगर आप इसमें देखोगे तो क्या पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है, तो काफी बच्चों ने क्या किया था, इसमें पैटर्न मिसमैच कर दिया था। जैसे कि उनको लग रहा था कि यहाँ पर ये दो है, यहाँ पर दो है, और ऐसा कुछ उन्होंने कर दिया था कि यहाँ पर अलग अलग सिंबल होगा और बीच में कुछ होगा। उस चीज को मत पकड़ो। सबसे पहले सबसे ज्यादा कॉमन चीजों को पकड़ा करो। जैसे इसमें अगर आपको ये दिख रहा है कि डायगोनल में 2 प्लस है और बीच में अलग सिंबल है, इसमें भी 2 प्लस है और अलग सिंबल है, तो ऐसा पैटर्न अगर आप सोच रहे हो जैसे इसमें भी 2 प्लस है और बीच में अलग सिंबल है, तो ऐसा नहीं होगा। सबसे ज्यादा कॉमन पैटर्न अगर आप देखोगे तो आपको नोटिस होगा कि चारों जो कोने हैं, चारों कोने उस पर यहाँ पर प्लस का सिंबल है, चारों कोनों पे प्लस का सिंबल है। तो अगर आप इसमें देखोगे तो इसमें भी यहाँ पर चारों कोने हैं, उस पर प्लस का सिंबल है, और इसमें भी चारों कोने हैं, उसमें प्लस का सिंबल है। तो जो सबसे ज्यादा कॉमन पैटर्न आपको दिख रहा हो उसकी तरफ हमेशा जाना। तो जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, यहाँ पर 2, 4। सो 2, 4 इसका आंसर यहाँ पर होने वाला है, बिकॉज जो चारों कोने हैं वो यहाँ पर प्लस का सिंबल है। तो ये होता है इंडक्टिव, इजी है, बट इसमें आपको हायर लेवल तक जाना पड़ेगा। फिर आता है मोशन चैलेंज। अब मोशन चैलेंज आपका लास्ट प्रकार का गेम होता है। अब इसमें आपको एक बॉल होती है, उसको आपको उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचाना होता है। अब आपको क्या करना है कि बॉल को, ये जो पटरियां दिख रही हैं आपको, इनको कम से कम मूवमेंट में मूव करना है और बॉल को अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है। सपोज स्टार्टिंग पॉइंट आपका इस जगह से है, तो अगर आपका स्टार्टिंग पॉइंट बॉल का इस जगह से है तो आपकी बॉल कितना मूवमेंट करेगी। सबसे पहले एक स्टेप में बॉल यहाँ से यहाँ गई और दूसरे स्टेप में यहाँ से यहाँ गई, तो 2 स्टेप में बॉल यहाँ पर आ गई, ठीक है। अब 2 स्टेप कंप्लीट होने के बाद ये जो आपका स्पेस है ये एम्प्टी है, तो ये वाली जो ग्रीन प्लेट है आप इसको नीचे सरका सकते हो। अगर ये नीचे चली गई तो ये प्लेट जब नीचे चली जाएगी तो ये वाला जो जगह है ये खाली हो जाएगा और ये वाली प्लेट यहाँ पर नीचे आ जाएगी। अब ये वाली जगह खाली हो गई तो ये वाली भी जगह खाली हो गई। अगर ये वाली जगह खाली हो गई तो इस प्लेट को आप इस जगह पर यहाँ पर हटा सकते हो, तो ये वाली जो प्लेट है ये यहाँ पर चली जाएगी। तो हमें जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। और जब आपको स्ट्रक्चर इस प्रकार से देखने को मिलेगा तो ये बॉल से लेकर आप ये बॉल का जो पूरा डेस्टिनेशन तक का जो स्टेप है वो आपको यहाँ पर खाली देखने को मिलेगा, और आपकी जो बॉल है वो यहाँ पर इस गोल तक पहुंच जाएगी। सो बेसिकली आपको प्लेट्स को हटा के आपकी बॉल को ऐसे मूव कराना है कि वो डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए। दिस इज द मोशन चैलेंज, ओके। सो ये 4 गेम्स आपको देखने को मिलने वाले हैं कॉग्निजेंट में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एप्टीट्यूड। बाकी मॉक टेस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसको आप यूज कर सकते हो फॉर योर प्रैक्टिस एंड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Now we will talk about the technical section. So in the technical section,
it is divided generally into four parts. There will be MCQ in the fourth part, where we will be focusing on three parts. There will be two coding questions, there will be two SQL queries, and there will be one web-based question. In these two coding questions, the level will be easy to medium. One question you can expect from easy level, and one question you can expect of medium level. Two SQL queries, there can be medium level of SQL queries, okay, and there can be 6 to 7 tables which you need to join. After joining the tables, you need to put some SQL query, okay, and then there will be one web-based question which will be based on HTML, CSS, and JavaScript. Let's solve some previous year question of this section to understand this section in better way. Now let's start with our questions and solution. So let's start with the web-based question first. Okay. So this kind of web-based question was asked. So if you are watching this video, I will be explaining you the question with the solution. Make sure to like the video if you have not liked yet, and subscribe the channel if you have not subscribed the channel yet. Let's start. This was the question. You are developing a basic contact page for a company website. Okay. So what we need to develop is a web page contact. Okay, contact page we need to develop. Okay, the company requires user to enter their name and email address. Okay, so only two things we need. One is username and other is email address. Okay, before submitting the form you must ensure that the name field is not empty. Okay, and it has at least two characters. Okay, so I hope you guys got it. So we need to design a HTML form like this. Here we have name and here we have email. The name field cannot be empty, okay, and at least it should have two characters. The email field contains a valid email address format, example at domain.com. Okay, so this format we need to validate through JavaScript. That example something can be there, then there should be at, then there should be some domain, then dot, then com. Okay, if validation fails, an error message should be shown. Okay. If validation passes, a success message should be displayed. So this kind of form we need to design using HTML, CSS, JavaScript. Write an HTML form with JavaScript that contains two input fields, name and email, a submit button, perform basic client-side validation for the email address, show appropriate success or error message. Okay, so this is our task which we need to perform. Okay, I don't think it is a very difficult question. We can easily do that. So let's start. First of all, this is the basic syntax of HTML. We all know. Okay, then we are just providing one heading which is contact form. Then we are providing the form ID. Okay, and now let's start. So label we have provided name. Okay, then we have provided the input as name, type is text, and it is required because we cannot leave it empty. That's why we have used required. Okay, and if you guys don't know HTML, then I don't think you guys can get it, but I am just explaining you the basic solution. Then we provided the another label which is email, then input ID as email, name, text, required, because this is also required. And we have provided some basic styling. Okay, button type we have provided submit, and submit button is there. Okay, and this is our form. That's it. And we have done some basic styling using CSS. Okay, now let's start. This is our main JavaScript which we need to write, and this is the main question. So first of all, what we will do is, if you guys can see here, here in the contact form, this is no validate. Okay, so no validate. Okay, so just see here. Okay, I'll just show you. Okay, so this is our script. Okay, so now see here, we have provided the contact form and we have adding the event listener submit in it. Okay, so when the form will be getting clicked, this function will get invoke. Okay, so we are attaching the event listener here in this contact form. Okay, in the submit function. Let's start. So we सबसे पहले we have extracted the value of name in name variable. Then we have extracted the value of email in email variable. Okay, we are using get element by id because we already provided the id in the field. Okay, then we are checking uh,
email error. Okay, so this is basically I will explain, and then result also we are storing here. Okay, so this two things I will explain, don't worry. Okay, then error text content. Okay, so this message we will show when we will display error. Okay, and result text content we will display it when we will if our check is pass. Okay, first condition we have checked if the name dot length is less than 2. Okay, so this was the one condition which we need to check. Then we will provide a alert message, please return a valid name at least 2 character, and we will return here. Okay, this is the one condition which we need to satisfy. Okay, this we already satisfied because we extract the value in name. Then we need to validate the email. This was our second condition. So we have provided one function is valid email, and we are passing the email there. Okay, now how this function will work, this is the function. Okay, is valid email. So here we are actually doing the pattern matching. Okay, pattern matching we are performing here. Okay, how we are performing, सबसे पहले this is our pattern which we are using, and our pattern is we can use anything between small a to small z, long a to long z, मतलब capital, and 0 to 9. Okay, and then some symbols. Okay, so this we can do. After that, because our basic example was example, okay, at domain.com, this was our basic example. Okay, so example we have done, then it should have at, then we have provided plus, then at, because at should be there here. Then there should be a domain, so domain also we have provided anything between small a to z, then capital A to z, and 0 to 9, and dot, and minus. Okay, so this we have provided. Okay, आफ्टर दैट लाइक डॉट एंड माइनस मींस कुछ भी हो सकता है. ओके, देन मतलब आगे पीछे आप ये मान के चलो, बेसिकली आगे पीछे कुछ भी हो सकता है. देन इट शुड हैव सम डॉट. ओके, दैट्स व्हाई वी हैव प्रोवाइडेड डॉट. सो प्लस, देन वी हैव प्रोवाइडेड डॉट, and small a to z, then a to z. Okay, and then if you guys can see here, and here is our length. So this is our basic pattern which we have provided here to validate our email. Okay, to get it in detail like what we are doing here, you can just google it, that how can we do a basic validation on javascript for email address. You will be getting the same pattern. Okay, so this was the pattern, and it comes under pattern matching, but I'm just explaining the basic things. Okay, I am not going much deep in it. Okay, then return re.test email, so it will test it if whatever the email address is follows the rule of this pattern or not. If it follows the rules, then definitely we will return true, otherwise we will return false. Okay, so according to that we will be getting here our input. Okay, then suppose if we are getting false, then we are using here not symbol, and we are providing the text content as please enter a valid email address. Okay, so this is the message which we are providing. So email error dot text content we are providing, which will display actually on the front end. Okay, and we are returning that because we are setting the value like this. Okay, so we are basically setting the text content value of email error whatever we have provided here in the front end. Okay, so that value we are actually setting here. Okay, so I'll just tell you. Okay, so uh, 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 result. Okay, so see here we have provided here email error, right? So in this span the text will be displayed. Okay, so in this text whatever the error would be displayed. Okay, and then we have provided here the result. So if we are succeed, then here the result will be displayed. So we are just setting the value of the text content here. Okay, and otherwise we will be setting the text content as form submitted successfully. Okay, so that's it. These are the all things which we need to cover. Pattern matching, I hope this is little bit confusion for you guys, like how we are doing the pattern matching, but actually I cannot explain the whole concept here because we need to create a separate video for that. Just google it, you will get it. It is not that much difficult. Okay, I just explained you the whole context of the question and what we need to do here.
Okay, so this is the whole solution. I hope you guys got it. Let's start with the coding question. So this is our coding question. Before going ahead with it, if you want the previous year questions or technical assessment mock test, the link of the mock test will be in the description, in which the previous year question solutions are provided and the practice MCQs provided. So everything is provided, SQL provided, and you can use this for your practice. Okay, link will be in the description. Apply the promo code Cognizant. This is the basic coding question which was asked previously. Cognizant HR is preparing a list of employees eligible for two different training programs. Program A has employees enrolled by HR. Okay, so basically two types of employee there. Okay, so program A, so two types of programs are there. So program A has the employee enrolled by HR. So okay, so HR is enrolling some employees. The list of the employees enrolled by the HR is there in program A. In the program B, list of the employees, okay, which are enrolled by technical leads. So we have the list for that also. Now some employees have enrolled in both program. Okay, so suppose we have some employees ID like 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, now suppose in HR program employee 1, 4, 5 and 6 enrolled. For technical lead program, means program B, suppose 1, 2, 3 and 6 enrolled. Okay, now they are saying some employees have enrolled in the both programs. So if you guys can see here, 1 enrolled in both, 6 enrolled in both. Okay, so this is one example which I am explaining you. You are required to write a Java program that prints the intersection of the two integer arrays representing employee IDs. So output would be 1 comma 6, because 1 and 6, these both employees enrolled both in HR and technical lead, basically program A and program B. So we actually need to provide the intersection of two arrays. This is the basic question. Okay, input format and output format is given. So I think the question is pretty much you guys got it. What will be the logic? So basically the logic is we have two arrays. Okay, array 1 and array 2. Suppose in array 1, as I have explained, we have 1, 2, what we have? 1, 4, 5, 6. Okay, 1, 4, 5, and 6. And in array 2, we have 1, 2, 3, 6. So 1, 2, 3, 6. Okay, so these are our inputs. So we will take the inputs of the array, which already will be provided by Cognizant only. Actually, we need to write the code for the intersection. Okay, so what we will do here, we will actually, for from array 1, we will put each and every value of array 1 in a set. So in a set, we will store the value of array 1. So the set will contain 1, 4, 5 and 6. Okay, after getting the value in the set, we will loop the array 2. We will check if the value exists in the set, and if the value exists, we will be inserting that value in our final result array. Okay, so let's start with 1. So is 1 exist in set? Yes, it exists, so we will insert 1 here. Next element is 2. Is 2 exist in this set in 1, 4, 5, 6? No, so we will not include 2 here. Then we will check 3. If 3 exists here, no. And we will check 6. If 6 exists here, yes. So 6 exists in the set. Then we will insert it in our final result also. So our final answer is 1 comma 6. It would be our answer. I hope the logic is clear. Pretty much simple. Also, we will be removing the element from the set when we will be getting the value of it. Okay, so let's start. So first we are taking the inputs of the both two arrays. This is pretty much simple. Then we are creating one hash set. If you guys can see here, hash set integer kind of we are creating. Then we are inserting the numbers in the hash set. Okay, so in the set we are adding the numbers like I have told here from the array 1. We are inserting the values here in the set. Then we created intersection array as our final array, which will be displaying the final output. Now we are iterating the second array. Okay, and in iterating the second array, we are extracting the element. We are checking if that set which we already have the values from the array 1 contains that value. So we are using if set1 dot contains num, whatever the element which we are extracting. If it is containing that, we are inserting it in our intersection array. Okay, and we are removing that number from our set. Okay, and finally in the last we are just displaying the value of our intersection array.
Okay, and this would be our answer. So I hope the whole logic is clear. Okay, so this is the one question which was asked there in Cognizant. Now we will just solve the SQL question. Also, the link of the mock test will be in the description, which you can use. Also, the link of the one set which we already solved will be in the description, which you can use. Let's start the scenario. This was the question. An e-commerce company stores customer order in a table called orders. The table has the following structure. Okay, so orders, we have orders in integer, customer name in varchar, order date in date, and amount in decimal. Okay, so this kind of table is here, in which order ID is given, customer name is given, order date is given, and amount is given. The manager wants to analyze monthly sales. Specifically, they want to know the total number of orders placed in each month, the total sales amount of each month. Okay, so basically, we have order ID, customer name, and order date. We actually, the manager wants to check, okay, the total number of orders placed in each month. So based on the months, we need to do the grouping. Okay, because clearly mentioned in each month we want to check how many orders are there, and the total sale amount for each month, also the total value of the order in that month. Okay, for an example, if you will look here, this is 2025 115, that means January. 2025 120 means January. So in January, if you guys can see here, we have two orders. One is from Alice, one from Bob. So for January, we have how many orders? We have two. And what is the amount? 250 and 180. Okay, so it would be 430. So this will be our final expected output. So expected output will be in Jan, two orders and 430 amount. In Feb, three orders, 670 amount. In March, one order and 500 amount. This kind of output we need to do. So this is the basic query. Okay, so this is the basic SQL query which we are doing. Okay, so here, if you guys can see here, so this is in SQL format. Okay, so I am just telling you the basic SQL syntax. So here we are, firstly we are doing the date format. Okay, so date format we are doing here. Okay, and this is for MySQL version. So first of all, we are choosing the date format. So date format we are choosing as order date. Okay, and has slash b as month. Okay, slash b as month. I will explain it, don't worry. Okay, so this we are just choosing the date format for order date. So order date here. Okay, so in the order date we have provided all the dates. We are just choosing the date format. Okay, and we are taking it as month. Okay, now we are taking the total number of orders which we need to display here. So we are using the count function, order ID as orders, and sum of whatever the order amount is. So we are using sum of amount as total sales. Okay, so these three things clear. From orders, okay, group by date format, again by this, because we are doing the date format like this as month, so it will display the month name like Jan, Feb, March. Okay, so something like that it will display here using this syntax. Okay, and we are grouping it by that month names. Okay, so we are doing the whatever it is, we are doing the date format and month, whatever the month it is. Okay, we are doing the grouping based on the months. Okay, and order by month, we are doing order by months. The whatever the order date is, we are doing the ordering by that. So first it will be January, then it would be February, then it would be March. Okay, so now you will ask like why we are not using the date format here. Okay, because this is not related to the display. When we are doing the ordering, it is only because we want to order the output in the monthly order. So we can do it by 1 2 3 also. So when we will do month order date, it will do the ordering based on the numbers like 1 2 3. That's why we are not using the format as the name. But in the group by, we are displaying, if you guys can see here, we are displaying the months in the text format. That's why in the group by we need to use that same exact format. Okay, also uh, actually we are doing the ordering based on the months. That's why we are using months order date. Okay, sorry, we are using the grouping using the months. That's why in the group by we are also using the month order date. Okay, this we are only using for the format. Okay, now just to understand what is the date format, I'll just explain you.
Okay, so date format in SQL, just search it. Okay, so here you will be getting the overall idea. Okay, so date format function, how it will work. So if you guys can see here, so date format, if we are doing here hashtag y or hashtag b, okay, what it means. Okay, so hashtag b will use the month name like Jan to December. That's why if you guys can see here in the solution, we are doing this the slash b, okay, the percentage b. Okay, so basically we are using this percentage b just to extract the month name. If we want to know the weekday name, we use that percentage a, and if we want numeric month name 0 to 12, then we use the percentage c. Okay, so every percentage meaning is there. Okay, if you guys can see here, every percentage meaning is given here. You don't need to remember each and everything, but only the month, year, this thing generally they ask. Okay, so this you can remember from this sheet. Okay, also the formatting is given here, the date format will be there, and how we need to extract that, how we want the exact output, that's why we provide here the format. So suppose I'll just tell you. Okay, so here we are using order dates. So order date would be like suppose 2025 01 and 15. Okay, so it is 2025 01 and 15. Now we are saying percentage b, that we want the month name from this format. So this is our input, and we are using here percentage b, so it will provide us the month name like January. Okay, I hope now it is clear. So in the display we can get like January, February and March. Okay, and in the group by we can only we can use the group by only using the order date. Okay, by using the months we can do that, but it is a good practice, whatever we are providing in the select statement also we provide that in the group by. So in the select statement we are actually doing the ordering using the date format. That's why we are using the same thing here as well, because we are basically changing the specific format of that. Okay, I hope this is clear to you. So this would be our MySQL answer. I hope we have solved the whole set. I hope you guys like this video. Thank you so much for watching.